we are talking about 11th physics sound waves, NCERT at fingertips, and we will proceed further from question number 91 onwards, which are based on the Doppler effect. So this is the formula for Doppler effect. इस फॉर्मूले में let me tell you that ये है apparent frequency nu. फ्रीक्वेंसी को जैसे कि मैंने बताया कभी n बोलते हैं, कभी f बोलते हैं, तो कभी nu बोलते हैं. तो यहाँ पर हमने nu बोल दिया. Nu dash is the apparent frequency and nu is the actual frequency. So this is the formula for the apparent frequency. There is change in the frequency because of the relative motion between the source, observer and the medium का velocity, isn't it? So यहाँ पर v plus vm minus v0, v plus vm minus vs. अच्छा, अगर velocity of the medium is 0, मतलब medium का velocity जो है वो stationary है. If the medium is stationary, air जो होता है वो stationary होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने relative velocity के हिसाब से भी दिया है. So velocity of the medium, if the velocity of the medium is 0, तो ये formula जो है वो reduce हो जाता है इस तरह से. If the medium is at rest, velocity of medium is 0, then we use this formula. तो generally हमने को ये वाला formula use करना पड़ता है. और sign conventions के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया है कि if it is in the direction of the sound तो वो plus होता है, if it is in the direction opposite direction तो वो minus होता है. So based on this we are going to solve the numericals of this. Is that clear? So let us start with the questions based on the Doppler effect. So let me go to question number 91. Question number 91. चलिए, the Doppler effect is applicable for. The Doppler effect is applicable for both the waves. The Doppler effect is applicable for both the waves, sound as well as the light waves, isn't it? So here, what would be the answer here? The sound wave as well as the light wave. C is the answer. Is that clear? Okay. I'll go for the next part now. Well, this is the question. Match the following type of question. Match the following. क्या दिया है यहाँ पे? अब देखिए इसमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ये हम 12th स्टैंडर्ड में देखने वाले हैं, लेकिन बाकी चीजें तो तीन हम मैच कर सकते हैं. चेंज इन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर. वेल, वेयर इज दिस डायरेक्टेड, वेयर इज दिस टू बी कनेक्टेड? ये कहाँ कनेक्ट करना चाहिए? इट इज नथिंग बट डॉपलर इफेक्ट ना. सो दिस हैज टू बी कनेक्टेड विद आर. यस और नो? इजंट इट? राइट. अगला वाला देखते हैं. Sound waves in the air are. Sound waves in the air are longitudinal waves. Sound waves in the air are longitudinal waves. बराबर है क्या? So this is S. Is this clear? समझे क्या? Isn't it? चलिए अगला वाला पार्ट देखते हैं. Light waves are. The light waves are transverse waves. They are made up of crest and trough ना. हेलो, तो अब देखिए ARCS और DQ वाला कौन सा है? ARCS और DQ वाला कौन सा है? तो C is the answer. Is this clear to you? तो यहाँ पर मुझे intensity of sound wave, intensity of sound varies with the time in, तो वो मुझे अपने आप आंसर मिल गया. What would be the answer for that? क्या होगा इसका आंसर जी? बताइए. The answer for that would be, naturally ये अपने को पता नहीं, लेकिन but that will be beats. Is this clear to you all? Any doubts about that? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Go for the next question now. क्वेश्चन नंबर 93. अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन शुरू हो गए डॉपलर इफेक्ट के, और ये क्वेश्चंस without calci, these questions are solvable. These questions are solvable without calci, and I insist that we should solve this without calci. HC वर्मा है तो ऐसे यूज करो. NCERT के लिए as far as possible we will avoid the use of calculator. Is that clear? We will be directly solving it without using the calci.
A train standing, a train standing at the outer signal, standing at the outer signal of a railway station blows a whistle of frequency this. Now this is the actual frequency. Let me call this as n is equal to 400 hertz. n बोलो या न्यू बोल दो, मैं उसको n बोल दूंगा, ठीक है? ये होगा actual frequency. This is the actual frequency. The train begins to move with the speed of. Now देखिए train move हो रहा है. Please check here. The train is moving. So this is the train. ये ट्रेन है, रेलगाड़ी, ये ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है? So train moves with what speed? This is moving with the speed of. अब ये ट्रेन जो है वो it's blowing the horn ना, समझो कि ये है वो horn, तो ये ऐसे जाएगा, बराबर है? So this will be the direction of velocity of sound. This is the velocity of sound and this is velocity of the source. Yes or no? ये जो horn है वो ट्रेन पे फिट किया गया है. Say for example, okay? The frequency of the sound heard by the observer standing on the platform. तो देखिए यहाँ पर कोई observer है, he is standing on the platform here. He is standing, so he is the observer and उसका velocity 0 है. Train is moving with certain velocity. Train is moving with 30 meter per second. Is this clear to you all? तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि observer का velocity 0 है. ट्रेन का वेलोसिटी मतलब सोर्स वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड द वेलोसिटी VSS फॉर सोर्स. प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द सोर्स एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो डायरेक्शन ऑफ साउंड का वेलोसिटी एंड सोर्स का वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब ये प्लस आया. इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग हियर. तो यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी हियर करेगा वो होगा n डैश एंड दैट इज गोइंग टू बी द एपरेंट फ्रीक्वेंसी. That is going to be the apparent frequency. और apparent frequency मुझे find out करना है. I want to find out the apparent frequency. Is this clear to all? Any doubts about that? I have to find out this frequency. समझ में आ गई बात? Okay. Velocity of sound is given to be 330 meter per second. चलिए मुझे formula बताइए क्या होगा? What would be the formula? The formula says according to the Doppler's equation, n dash is equal to V minus VO divided by V minus Vs into n. This is the formula for the apparent frequency. Doppler's effect का ये formula है. समझ में आ गया? अब इसमें मुझे पता है कि V0 is equal to 0 and Vs positive है, मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा. So when I substitute this, what am I going to get there? So give me n dash is equal to V, that is equal to 330 divided by 330 minus 30, क्योंकि ये माइनस और अंदर का साइन प्लस ही रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इनटू व्हाट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज. So let me simplify this. This will become 330 upon 300 into 400. देखिए this is very easy. 0 0 gets cancelled and this is 3 1 और ये 0 as it is रहेगा. So this is 11 4 44. So what is the apparent frequency? 440 hertz. So what is the answer here? C is the answer. यहाँ पर आपको पहले डायग्राम बना लो, स्केच बना लो, डिसाइड द डायरेक्शंस, डिसाइड द साइंस, प्लस या माइनस होगा वो, एंड सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर. दिस इज क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ओके, सेम इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जी. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94. क्वेश्चन नंबर 94 ये रहा आपके स्क्रीन पर. A train standing in a station yard blows a whistle of frequency. अब आपको मुझे बताना है कि ये क्या है, इसका सिंबल क्या है. It blows this thing of frequency. What is this? This is equal to n, actual frequency. This is the actual frequency. Is that here? That is equal to 400 hertz. ठीक है? In the still air, the wind starts blowing. Wind starts blowing. Wind starts blowing. Wind starts blowing. What does this mean? Wind starts blowing. मतलब medium is having certain velocity. Medium, velocity of the medium.
बराबर है क्या? आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था ना, n डैश इज इक्वल टू v प्लस vm माइनस vo डिवाइडेड बाय v प्लस vm माइनस vs इंटू n। यही तो फॉर्मूला है ना वो, isn't it? We have seen this formula. अभी अभी आपको मैंने दिखाया था, isn't it? Where Vm is the velocity of the medium. Is that clear? ठीक है, तो wind starts blowing in the direction from the yard to the station. देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर दूँ, मैं ड्रॉ द डायग्राम हियर, इस ट्रेन का डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। वेल दिस इज द ट्रेन, दिस ट्रेन इज मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन, ये है। अब देखिए ये यार्ड्स में खड़ी है ट्रेन, दिस इज इन यार्ड, और इस तरफ कहीं पे स्टेशन है, दिस इज द स्टेशन, ठीक है। द ट्रेन स्टैंडिंग इन द स्टेशन यार्ड ब्लोज अ व्हिसल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, तो यहाँ से एक व्हिसल ब्लो किया गया है, यहाँ से जो साउंड निकलेगा वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ओके। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम यार्ड टू स्टेशन। विंड का वेलोसिटी कहाँ से कहाँ है भाई? फ्रॉम यार्ड टू स्टेशन, तो ये है वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। अब ये मीडियम का वेलोसिटी की वजह से ये जो स्पीड और साउंड है वो इंक्रीज हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? साउंड का खुद का वेलोसिटी है और साउंड इज ट्रैवलिंग इन द एयर, और एयर भी दौड़ रहा है, एयर भी दौड़ रहा है, एयर इज आल्सो रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उसका वेलोसिटी ऐड हो जाएगा ना उसमें, इसलिए यहाँ पर वो वेलोसिटी ऐड हो जाएगा इफ इट इज इन द सेम डायरेक्शन। अगर विंड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता तो वो माइनस हो जाता वहां पर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? दिस इज क्लियर, दिस इज दैट इज द रीजन व्हाई इसको मैं स्टार प्रॉब्लम बोलूंगा, isn't it? So it is moving with the speed of from yard to station in the speed of 10 meter per second. So what is the velocity of the medium? 10 meter per second. This is velocity of the wind. Is that clear? समझ में आ रहा है? Okay. Which one of the following statements is correct? Velocity of sound in the still air is equal to 340. देखिए ना, अगर स्टिल एयर है तो ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, लेकिन एयर भी उसके साथ फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड और बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड, अब ये स्टेशनरी है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इज जीरो, एंड यहाँ पर स्टेशन के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसका भी वेलोसिटी है जीरो, तो ये दोनों वेलोसिटीज नहीं है, जीरो ही है। ओके, अगर ये दोनों वेलोसिटी जीरो है तो क्या होगा बताइए? व्हाट विल बी n डैश इज इक्वल टू, देखिए v कितना है? 340 है, vs कितना है? 10 है, दिस इज आल्सो 340, और ये 10 into n, तो ये 340 plus 10 कैंसिल, सो व्हाट विल बी अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सिर्फ विंड फ्लो हो रहा है तो, लेकिन सोर्स या ऑब्जर्वर अगर मूव करेंगे, मतलब vo या vs अगर होगा तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? So there has to be movement of either source or observer or both, तब apparent frequency बनती होगा। अगर मीडियम फ्लो हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। समझ में आ रही है बात? Is that clear? So what is the option here? The option is the frequency of the sound as heard by the observer standing in the platform is 400. हाँ, वो सेम 400 का ही उसको frequency सुनाई देगा। So what is the answer here? A is the answer here. Is that clear? वो बोल रहा है स्पीड ऑफ द साउंड heard by the observer is 330, will increase, will decrease. No, वो सेम रहेगा और वो 400 ही रहेगा। Is that clear to you? Is that okay? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। Go for the next question now. Question number 95. क्या समझे? क्यों? Why? देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे रॉकेट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकेंड। रॉकेट is moving with the speed of, so let me say this is the rocket,
It's moving with certain velocity. What is the velocity? It's moving with 220 meter per second. Okay. Towards a stationary target. Well, let me say that this is the target. Okay? This is stationary target. The velocity is equal to 0. Alright. Emits the sound of frequency 1000 hertz. यहाँ से कुछ sound जो रहेगा उसका frequency. So velocity of the sound. इसका frequency दिया है. इसका frequency दिया है n is equal to 1000 hertz. Some of the sound reaching the target gets reflected back to the rocket as an echo. यहाँ पर जाएगा वो और इसको हिट करके फिर यहाँ से वापस आएगा. Are you understanding that? ठीक है. जैसे वो पुलिस का डॉपलर गन था वैसे. The frequency of the echo as detected by the rocket is. So what is the frequency which is detected by this? Now this consists of two stages. Stage 1. I'm going for the stage 1. कि ये waves वहां पर जा रहे हैं. The waves are going in this direction. ठीक है? So here, in this case, rocket is the source. And this is the observer. Yes or no? ये listener है. Are you understanding that? So here, velocity of the source is this. Velocity of sound तो उन्होंने दिया है. V is equal to 330 meter per second. That's fine. This is velocity of the sound. But velocity of the observer is 0. So what will be the formula? What is the frequency which is received by the target? Frequency received बोलिए या detected बोलिए. By target. By target. Target ने क्या frequency receive किया जाएगा? I'll call this as n dash, and n dash is equal to v minus vo upon v minus vs into n. बराबर है क्या? Isn't it? Now यहाँ पर observer का velocity तो 0 है. अच्छा, ये sound भी उसी दिशा में जाएगा और source भी उसी दिशा में जाएगा, तो ये प्लस आएगा. Yes or no? Isn't it? तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा. वो प्लस है मतलब ये क्या बन जाएगा? व्हाट विल बी n dash is equal to v which is 330 divided minus 0 है and this is 330 minus vs. vs is velocity of the source which is 220. गौर से देखिए. Into what is the frequency here? 1000 hertz. Isn't it? So what do we get there? This will become 330 upon 1110 into 1000. Is this okay? ये गया and this is 3 जा. So what is the n dash is equal to 3000 hertz. Is this clear? So this is the frequency which is received by the target. लेकिन target इस frequency को reflect कर रहा है. Target को इतना frequency receive होगा. Are you understanding that? अब यही frequency वो stage 2 में reflection करेगा. So I'll go for stage 2 now. जहाँ पर target is giving out the frequency, and what is the frequency of this? I'll call this as n या n dash जो ही बोलेंगे. This is 3000 hertz, and in this case this target becomes the source, क्योंकि यहाँ से निकले वाले जो है वो waves इसको echo बन रहे हैं. Are you understanding that? This is giving out the waves of frequency 3000 hertz, क्योंकि वो reflected है ना. So this becomes the source. और अब की बार ये जो what do you call this as? ये क्या है? Rocket जो है, that rocket that becomes the observer, क्योंकि वो इसको receive करने वाला है. जो reflected waves है वो इसको receive करने वाला है. Yes or no? So this is the velocity of the observer. So this is the velocity of the observer. कितना दिया है velocity of the observer? It is given to be कहाँ गया rocket? हाँ, 220. This is given to be 220. Are you understanding what I am saying there? 220 meter per second. और ये velocity इस तरफ है, जबकि sound जो है वो इस तरफ आ रहा है. This is the direction of the sound and this is the direction. तो ये यहाँ पर minus होगा. Are you understanding that? क्योंकि they are in the opposite direction. समझ में आया? And velocity of the source is stationary, तो उसका velocity 0 होगा.
इज दिस क्लियर? अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा n डबल डैश इज इक्वल टू v माइनस vo अपॉन v माइनस vs इंटू n डैश क्योंकि वो यहाँ पर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगा, अभी n डैश वाला फ्रीक्वेंसी इधर आ रहा है, अब वो रिसीव कितना करेगा? सो n डबल डैश दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द रॉकेट, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड या फिर हम बोल सकते हैं डिटेक्टेड बाय रॉकेट, डिटेक्टेड बाय रॉकेट, रॉकेट से जो फ्रीक्वेंसी रिसीव किया जाएगा इट इज n डबल डैश। नाउ दिस इज v। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इज 0 एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर इज माइनस 220, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो व्हाट शैल आई राइट हियर? बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है जी? यहाँ पे साउंड का वेलोसिटी दिया 330, बराबर है क्या? सो आई राइट दिस एज 330 माइनस माइनस प्लस 220 डिवाइडेड बाय 330 इनटू n डैश कितना है हमने जो कैलकुलेट किया है 3000, सो दिस विल गिव मी 550 अपॉन 330 इनटू 3000, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 3 जा and 11 5 जा and 3 1 जा। So what is the frequency detected by the rocket? The reflected waves का frequency which is detected by the rocket is 5000 hertz. So what is the answer here? The answer is C. Is this clear to you all? Is this clear to you all? Any doubts about that? समझ में आया सबको ये? Okay? So that's why this is a double star problem. समझ में आ गया क्यों? Is that okay? अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। Let's go for the next question number. Question number 96. सेम टाइप है इस क्वेश्चन का। A train approaching the railway platform with a speed of, चलो मुझे यहाँ पे ट्रेन ड्रॉ करना पड़ेगा। This is the train और यहाँ पर है रेलवे प्लेटफॉर्म। This train is moving towards the railway platform with certain velocity. Isn't it? With a speed of, so this is velocity of the source 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो भी साउंड दिया जाएगा that sound will travel with certain velocity. That velocity is given as speed of sound is 340 meter per second. Okay, starts blowing the whistle. The speed of sound is 340 if the frequency of the emitted sound from the whistle, यहाँ से जो frequency actual frequency is 640 hertz. The frequency of the sound as heard by the person standing on the platform. तो यहाँ पर कोई person है is standing here. The velocity of the observer is 0. और ये velocity of sound and source they are in the same direction, तो ये plus होगा, isn't it? Isn't it? They are asking what is n dash, the apparent frequency. Again the same formula, n dash is equal to v minus vo upon v minus vs into n. Well, in this case vo is 0 and vs is plus 20. तो ये n dash क्या आएगा? n dash is equal to v is 340 divided by 340 minus 20 into 640. Now that is equal to 340 into 640 divided by 320. Well, this gets cancelled. 32 2s are, and the answer is 3680. 680 hertz is the frequency as heard by the observer. C is the answer. Is this clear to you all? Are you all understanding that? Application of Doppler's effect. Next question I'll go for. Question number 97. Well, that's a very good question.
क्वेश्चन नंबर 97. देखिए यहाँ पे, an observer moves towards a stationary source. Source is stationary. Well, this is the source. यहाँ से कुछ sound जा रहा है, but this source, velocity of the source is zero, stationary source. And there is an observer, he is moving towards the source. There is an observer which is moving towards the source. So this is velocity of the observer. अब देखिए source ऐसे sound दे रहा है, तो this is the velocity of the sound. So this is the direction of velocity of sound and this is the velocity of the observer. Are they in the opposite direction? Yes. इसलिए ये जो आएगा ये minus आएगा because it is in the opposite direction. Understood? Understood? ठीक है? Stationary source with the, of the sound with a velocity of 1/5 of the velocity of the sound. 1/5. Velocity 1/5 of the velocity of the sound. So V0 is equal to V upon 5. Understood? Velocity of sound ke 1/5. The percentage change in the apparent frequency is, percentage change in the apparent frequency is, let us say n is the actual frequency. N is the actual frequency. So apparent frequency is given by n dash. N dash is equal to V minus Vo upon V minus Vs into n. That is equal to V minus Vo. अब ये minus of minus divided by V minus Vs is 0 into n. तो कितना बनेगा रही? Therefore this is equal to V plus V upon 5 divided by V into n. समझे? Let us take V common. यहाँ से V common आएगा. 1 plus 1 upon 5 divided by V into n. V gets cancelled here. So this will become 5 plus 1, 6 upon 5 times n. So this is the apparent frequency. Apparent frequency. So what is change in the frequency? Change in the frequency. Change in the frequency is given by n dash minus n. What is n dash? 6 upon 5n minus n. So can I take n common? Yes. So what is this? 6 upon 5 minus 1. That is equal to 1 upon 5 times n. This is the change in the frequency. They want percentage change. So percentage change के लिए हम क्या करते हैं? Percentage change is equal to change in the frequency. Change in the frequency divided by original frequency into 100. इसे कहते हैं percentage change. Did you understand that? Did you understand that? Percentage change के लिए क्या होगा? It is change in the frequency divided by original frequency upon 100. So now let us substitute in this formula. क्या बन जाएगा बताइए? किसी भी चीज का परसेंटेज हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं ना, परसेंटेज जो होता है. Okay, so what is the change in the frequency? Please answer. Change in the frequency we have calculated 1 upon 5n, मतलब n by 5. What is the original frequency? n. Original मतलब actual frequency n है ना यार, आंसर करो प्लीज. So divided by n into 100. बराबर है क्या? So this n gets cancelled and this is actually 1 upon 5 into 100. That is equal to 20% change in the frequency. So they are asking what is the change in the frequency. Change in the frequency is percentage change in the frequency is 20%. So D is the answer here. Is this clear to you all? Any doubts about that? समझ में आया सबको? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let's go for the next question.
go for the next question. क्या मार्क किया मैंने? क्यों पता चलेगा, देखते हैं। बताइए, a source of sound producing the wavelength 50 सेंटीमीटर, क्या दिया है ये? wavelength is 50 सेंटीमीटर, lambda is moving away from the stationary observer. Velocity of the observer is 0. Moving away from the observer. देखिए अब यहाँ पे अगर पिक्चर ड्रॉ करना है मुझे, I'll prepare the picture here. ये यहाँ पर कुछ समझो कि एक व्हीकल है, ट्रक होगा, whatever. This is moving away from the stationary observer. तो ये ऑब्जर्वर है. Velocity of observer is 0. And इसका this is the source of sound ना, and this is moving away, so this is the velocity of the source. अब ये अगर कुछ बाजा बजा देगा, हॉर्न बजा देगा, जो भी कुछ है वो साउंड, इसको समझो कि यहाँ पर है साउंड, तो साउंड इस तरफ भी चला जाता है और इस तरफ भी चला जाता है. अगर इस तरफ ऑब्जर्वर है तो साउंड इज गोइंग टू गो लाइक दिस, बराबर है क्या? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड. समझे? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड वेलोसिटी ऑफ द सोर्स दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो इसलिए वो माइनस होगा, याद रखना. समझ में आ गई बात? विद 1/5 स्पीड ऑफ द साउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इज v upon 5, 1/5 स्पीड ऑफ द साउंड. देन व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर? सो दे आर आस्किंग व्हाट इज लैम्बडा डैश, एपरेंट वेवलेंथ. एपरेंट वेवलेंथ चाहिए उनको. समझ में आ गई बात? Is this clear to you? Is this okay? अब देखिए यहाँ पे मैं पहले apparent frequency find out करूँगा और फिर उससे मैं apparent wavelength find out करूँगा. So apparent frequency is V minus VO upon V minus VS into N. VO is 0, so this will become V upon V minus minus, that is plus V upon 5. Is that understood? Into N. तो यहाँ से V कॉमन रहेगा, तो this is V upon V inside the bracket 1 plus 1 upon 5, that is 6 upon 5 times N. ये कैंसिल हो जाएगा. So what is the apparent frequency? Apparent frequency is 5/6 times N. This is the apparent frequency, isn't it? अब मुझे पता है कि V is equal to N lambda होता है. That means lambda is equal to V upon N. V तो constant रहता है. V is the constant for the given medium. So lambda is inversely proportional to N. Lambda is inversely proportional to N. बराबर है क्या? Are you understanding that? So lambda dash is the new wavelength upon lambda, previous wavelength is 1 upon N dash upon 1 upon N. समझे क्या? तो lambda dash upon lambda is equal to N upon N dash. What will be N upon N dash is equal to 6 upon 5. समझे? ये N इधर रहेगा, N dash इधर जाएगा, 6 upon 5 इधर जाएगा. समझ में आ गया? So this is equal to 6 upon 5. So lambda dash is equal to 6 upon 5 times lambda. N dash is 5/6 होता है और ये 6 upon 5 होता है, because they are inversely proportional. अभी प्रूव कर लिया मैंने यहाँ पे. So they already given us what is the frequency, or wavelength is 50 centimeter. तो यहाँ पर मुझे बस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. So that is equal to 6 upon 5 into 50. अगर ये मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ तो यहाँ पर लैम्बडा डैश का आंसर है वो भी मुझे सेंटीमीटर में ही आएगा. So that will be equal to 60 centimeter or 0.6 meter. This is the apparent wavelength. So the apparent wavelength observed here is C. C is the answer. Please check here. You know, C is the answer, 60 centimeter. Is this clear to you? ये मैंने स्टार क्यों बोला, समझ में आ गया? क्योंकि जनरली हमारा कैलकुलेशन वेवलेंथ पे नहीं, फ्रीक्वेंसी एन डैश पे रुक जाता है. यहाँ पर कैलकुलेशन एक्सटेंड करना पड़ा अपने को लैम्बडा डैश पे, apparent wavelength. I hope this is clear to you all. Is that okay? I'll go for the next question. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Question number
99. Question number 99. A policeman blows a whistle with a frequency of 500 hertz, actual frequency. A car approaches him with a velocity of, अब देखिए यहाँ पर है policeman. Now this is the, what do you say, ये अगर whistle blow कर रहा है तो यहाँ से sound जाएगा. So basically this is the source. Yes or no? ये source है और यहाँ से कार आ रहा है बोलेंगे. The car is approaching from here. बराबर है क्या? The car यहाँ से आ रहा है. The car is approaching the policeman. जैसे ये है observer. This is the observer and this is the source. समझ में आ गई बात? He blows the whistle. A car approaches him with a velocity of. So what is the velocity of the observer? 15 meter per second. अब साउंड इस तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर इस तरफ आ रहा है तो क्लियरली इसका जो साइन है वो क्या आएगा? दिस इज गोइंग टू बी माइनस माइनस आएगा ना, ये साइन अपोजिट डायरेक्शन में है. द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द कार एज ही पासेस द पुलिसमैन इज. चेंज इन द फ्रीक्वेंसी पूछा है. अब यहाँ पर दो केसेस है. क्या केसेस है कि पहला ये कार यहां तक आएगा. दिस इज, तो ही इज अप्रोचिंग. दिस इज पार्ट 1. तो यहां पर होगा फ्रीक्वेंसी एन डैश. और दूसरा केस कि सेम पुलिसमैन के लिए, अब देखिए यही पुलिसमैन खड़ा है, तो सेम पुलिसमैन लेट अस से ही स्टैंडिंग ओवर हियर, लेकिन कार अब यहां से आगे गुजर चुका है एंड द कार इज गोइंग अवे फ्रॉम द पुलिसमैन. नाउ the car is going in this direction. Are you understanding that? अब देखिए whistle जो blow हो रहा है तो sound is traveling in all directions. For this particular observer, यही है observer अभी भी और यही है source अभी भी. The second case, this is the source. लेकिन इस बार मतलब यहाँ से जो sound जाएगा उस whistle का वो भी इसी दिशा में जा रहा है. This is V. And this is velocity of the observer. अब के बार ये velocity same direction में होने के कारण ये plus होगा velocity. Do you understand that? Isn't it? इसका velocity वही है 15 मीटर पर सेकंड. So this is the second case. This is the second case. जहाँ पर first case में क्या हो रहा है? The car approaches policeman. Car approaches policeman. Moves towards the policeman, and in the second case car recedes. Recedes माने goes away from the policeman. Are you understanding the difference in the two cases? और इसमें यहाँ का जो frequency है इसको मैं n double dash बोल दूंगा और ये n dash. तो I want change in the frequency, मतलब I want the difference in n dash and n double dash. इसका मुझे difference चाहिए. Is this clear? Is that okay? चलिए तो बात करते हैं first case की. अब first case की बात करेंगे तो let me write down the formula for the first case. So it will be n dash is equal to, बताइए क्या लिखेंगे हम लोग? n dash is equal to v minus vo upon v minus vs up into n. अब एक एक करके बताइए वो कितना होगा जी? यहाँ पे तो -15 होगा. v तो हमको पता ही है, v कितना है? 300. वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन टू बी 300 इन ऑल द केसेस. ओके. एंड यहाँ पर द पुलिसमैन इज स्टेशनरी. द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इज स्टेशनरी क्योंकि उसका वेलोसिटी कुछ भी नहीं दिया है. सो दिस इज 0. तो क्या आएगा? n डैश इज इक्वल टू 300 माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय 300 minus 0 into what is the frequency?
the frequency is 500 hertz. Okay, 500 hertz. So what will be n dash is equal to 315 into 500 divided by 300. तो ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो 3 वन जा एंड 3 फाइव जा 15, तो ये आएगा 5 5 25, 5 वन जा 5, 515 hertz is the frequency that is heard when the car is approaching the policeman. First case. Second case का frequency find out करने के लिए I'll use the formula n double dash is equal to v minus vo upon v minus vs into n. अब साइन कन्वेंशंस लगा दीजिएगा, क्या होंगे साइन कन्वेंशंस बताइए। इस बार ये v0 प्लस है, क्यों? क्योंकि ये साउंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड के डायरेक्शन में ही है, तो ये प्लस आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और बाकी वेलोसिटी ऑफ द सोर्स मतलब पुलिसमैन का वेलोसिटी जीरो ही है, यहाँ पर भी वो स्टेशनरी पुलिसमैन है। सो व्हाट विल बी n डबल डैश इज इक्वल टू v दैट इज 300 माइनस, क्योंकि माइनस प्लस इज माइनस 15 अपॉन 300 into n. n is कितना 500. So what do you get there? This will give me, ये दो zeros गए, ये भी गए, तो 285 into 5 upon 3. 3 1 जा, 3 9 जा 27, 3 5 जा, तो 475 है। So this is the frequency. So आते समय उसका frequency ज़्यादा नजर आएगा, जाते समय कम नजर आएगा। So what is the change in the frequency? What is change in the frequency? Change in the frequency is equal to n dash minus n double dash. That is equal to 50 hertz. So what is the change in the frequency there? 50 hertz का change है वहाँ पे. So what is the answer? B is the answer there. Is this clear to all? Any doubts about that? Shall I call this as a star? पता नहीं. Is this a star problem? I think it is. Any doubts about this? Is that clear? I'll go for the next question. Okay. Proceed now. अब ये जो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी होता है ना, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी जो हमने पहले कैलकुलेट किया ना, दिस चेंज इन द फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको? बीट फ्रीक्वेंसी। दिस इज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। इज दैट ओके? दो फ्रीक्वेंसीज में जो अंतर होता है, फर्क होता है, उसको बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें बीट ये कंसेप्ट यूज करना है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। In the next question we are going to make use of this concept of beat. Okay, let us proceed. A band, can you read this? तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। I think this is fine. A band playing music at a frequency nu. Frequency को उन्होंने क्या बोला है? Nu. How do we read it? Nu. Is moving towards the wall at a speed vb. एक वॉल है जहाँ पर
So let me prepare the wall over here. This is the wall. और यहाँ पर बैंड है, तो I'll prepare the band like this. मुझे बैंड कुछ इस प्रकार है, तो बैंड के जगह पर मैं स्पीकर लगा देता हूँ. ये स्पीकर है. This is moving ना, this is moving. तो इसका खुद का वेलोसिटी है. This is velocity of the sound, नहीं velocity of the source. और यहाँ से जो साउंड वेव्स निकलेंगे उसका भी वेलोसिटी होगा, उसको बोलेंगे v, velocity of the sound. Okay. With the speed of vb, velocity of the source is velocity of the band vb. समझ में आ गया? This is first part. जब साउंड इधर ट्रैवल कर रहा है. A motorist is following the band with a speed vm. Wow. इसके पीछे एक मोटरिस्ट है. He is moving with the speed vm. If the speed of the sound is v, the expression for the beat frequency heard by the motorist is. Now motorist is going to hear two types of sounds. कौन से दो टाइप्स मैं आपको बता दूं. पहला है साउंड which he hears directly. पहला है साउंड which he hears directly. यहां से आने वाला एक डायरेक्ट साउंड होगा. Yes or no? Can I call this as direct sound? Yes. जिसका फ्रीक्वेंसी होगा, अब देखिए ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, जिसकी वजह से देयर इज सर्टेन फ्रीक्वेंसी चेंज, तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा n डैश. समझ में आ गया? दूसरा जो फ्रीक्वेंसी होगा कि भाई ये वेव्स जाएंगे वहां पे और इस वॉल के यहां से वो रिफ्लेक्ट होके आएंगे. वॉल के यहां से रिफ्लेक्ट होके आएंगे, तो पहले जाने के वेव्स फिर वापस आने के वेव्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो ये जो रिफ्लेक्टेड है साउंड, रिफ्लेक्टेड, उस रिफ्लेक्टेड वेव्स का जो होगा साउंड, वो मुझे फाइंड आउट करेगा पड़ेगा. मैं उसको बोलूंगा n ट्रिपल डैश, या उसको मैं सिंपली n2 बोल देता हूँ. n2 is the reflected frequency. Are you understanding what I'm saying there? नहीं, देखो ना, पहला तो डायरेक्ट यहाँ से बैंड के यहाँ से आने वाला डायरेक्ट साउंड होगा, और दूसरा साउंड जो है, क्योंकि यहाँ से जो साउंड वो पास करेगा, वो साउंड दोनों तरफ से चलेगा ना. साउंड यहाँ से मतलब इस तरफ से भी तो आएगा, तो वो डायरेक्ट वाले वेव साउंड आएगा उसको. और दूसरा है कि यहाँ से जाके साउंड वॉल को टकराएगा और वापस आएगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी. और इन दोनों के फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द बीट फ्रीक्वेंसी. So what is the beat frequency? It is the difference in n dash and n2. That is the beat frequency. और यहाँ पर कोई नंबर दिया हुआ नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है. You have to deal with the whatever symbols are given to you. उस symbols के साथ आपको deal करना है. Any doubts about this? Is this clear to you? Alright. So let us start working over this. अब यहाँ का जो frequency है, उन्होंने उसको new बोला है. इंस्टेड ऑफ न्यू, वी और न्यू में कुछ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं उसको n बोल दूंगा. चलेगा ना? बाद में लास्ट में उसको मैं न्यू बोल चेंज कर दूंगा. एनीवेज, सो डायरेक्ट वेव्स का जो है, फर्स्ट पार्ट इज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी. वो मुझे कैलकुलेट करना है. दैट इज इक्वल टू n डैश. सो व्हाट इज n डैश? इज इक्वल टू n dash is equal to v minus vo upon v minus vs into n. इसमें v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड. vo. ऑब्जर्वर कौन होगा जी? यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन होगा? द बाइकर, मोटरिस्ट, isn't it? So this is going to be the velocity of the man. तो यहाँ पे साउंड इस तरफ जा रहा है और बाइकर इस तरफ जा रहा है, और सोर्स भी इसी तरफ जा रहा है. तो इन दिस केस इफ आई कंसीडर, तो ये माइनस होने वाला है, और ये जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है वो भी माइनस ही होने वाला है.
आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? समझे क्या? क्यों? क्योंकि सोर्स भी उस डायरेक्शन में जा रहा है, मोटरिस्ट भी उस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन साउंड इधर जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि साउंड, डायरेक्ट साउंड जो है वो बाइकर को सुनना है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इज दिस क्लियर? श्योर? पक्का? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये रहा ऑब्जर्वर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर व्हिच इज माइनस वी एल, एंड वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इज माइनस वी बी। चलिए मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे, दिस विल गिव मी एन डैश इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज वी प्लस वी एल अपॉन वी प्लस वी बी इंटू एन। आई कॉल दिस एज इक्वेशन 1। इज दिस क्लियर? अब ये जो रिफ्लेक्शन वाला है ना, रिफ्लेक्शन, उसके दो हिस्से होंगे रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड साउंड, साउंड रिफ्लेक्ट होने से पहले यहां तक पहुंचने वाला जो साउंड है, मुझे उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। रिफ्लेक्टेड साउंड सो यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी बोलूंगा एन डैश, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय वॉल, वॉल कुछ फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। अब फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय वॉल जो होगा, इट इज नथिंग बट v माइनस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस इंटू एन होगा। इसे मैं एन डबल डैश बोलूंगा। हाँ, एन डैश ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। इज दिस क्लियर? एन डबल डैश। अब मुझे इस केस में बताइए ऑब्जर्वर कौन होगा? ऑब्जर्वर होगा वॉल। ऑब्जर्वर कौन होगा? वॉल, एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर हियर इज 0। सोर्स कौन होगा? तो सोर्स यही होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड ये है, ऑब्जर्वर की तरफ साउंड से जाना चाहिए। ऑब्जर्वर जब पीछे है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरफ होगा, ऑब्जर्वर इस तरफ है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ये रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? क्योंकि जैसे आपने वीडियो में देखा, तो साउंड इज ट्रैवलिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, तो साउंड का डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे ऑब्जर्वर के पोजीशन के हिसाब से। प्रीवियस केस में ऑब्जर्वर था मोटरिस्ट, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड वाज दिस। यू अंडरस्टैंड दैट? ये था वेलोसिटी ऑफ साउंड। और अब ऑब्जर्वर ये है, अब ऑब्जर्वर कौन है? ये, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड नाउ। इज दिस क्लियर टू यू? हाँ, तो इस केस में अगर हम बात करें, इफ आई एम टॉकिंग हियर, इस केस में अगर हम बात करें, तो अगर ये है वॉल, दिस इज द ऑब्जर्वर, दैट इज जीरो वेलोसिटी, और ये जो बैंड का जो है, बैंड का साउंड इस तरफ जा रहा है, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द साउंड, द सेम इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू वीबी। अब ये प्लस होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो दिस इज प्लस वीबी। इज दिस क्लियर टू यू? So let me substitute here, this will give me n double dash is equal to v upon v minus vb into n. I'll call this as equation 2. अब यही फ्रीक्वेंसी वो रिफ्लेक्ट करेगा, ये फ्रीक्वेंसी वो रिफ्लेक्ट करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो दिस वाज 2a। अब हम रिफ्लेक्टेड साउंड का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। सो 2b इज रिफ्लेक्टेड साउंड, तो सेकेंड पार्ट, इस रिफ्लेक्टेड साउंड के अंदर क्या होने वाला है? देखिए, ये जो वॉल है, दिस वॉल इज गोइंग टू बिकम द सोर्स, समझे? और यहां से जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं वो जा रहे हैं इस तरफ। समझ में आ गया? इजंट इट? और ये रहा तुम्हारा बाइकर, तो बाइकर इज ओवर हियर, ही इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये है ऑब्जर्वर, दिस इज द ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स is 0, velocity of the observer is equal to velocity of the biker, but sound इस तरफ जा रहा है, biker इस तरफ जा रहा है, तो ये माइनस होगा। Is that understood? Is that understood? नहीं? Okay. और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है उनका फ्रीक्वेंसी है n डबल डैश, क्योंकि इसको जो रिसीव हुआ वही वो रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आ गई बात? तो अब मुझे चाहिए द n triple dash, this is the frequency of reflected waves, frequency of reflected waves detected by motorist, detected by
मोटरिस्ट, तो वो क्या होगा बताइए, दैट इज इक्वल टू n ट्रिपल डैश इज इक्वल टू v माइनस vo अपॉन v माइनस vs इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है n डबल डैश। समझ में आ गई बात? अब सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, सो n ट्रिपल डैश इज इक्वल टू v माइनस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है माइनस vb, तो v माइनस माइनस प्लस vb हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सोर्स का वेलोसिटी 0 है वहां पे, इनटू n डबल डैश। समझ में आ गई बात? अब मुझे यहाँ पर n डबल डैश में सब्स्टिट्यूट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दिस इज n डबल डैश v अपॉन v माइनस vb इनटू n। समझे? सो दिस इज v अपॉन v माइनस vb इनटू n, ये हो गया n डबल डैश, और ये पहला वाला ब्रैकेट विल बी एज इट इज v प्लस vb अपॉन v, तो ये v और v कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट इज n डबल डैश इज इक्वल टू v प्लस vb अपॉन v माइनस vb इनटू n। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मुझे चाहिए डिफरेंस, ये n ट्रिपल डैश है, मुझे चाहिए डिफरेंस इन डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी n डैश एंड रिफ्लेक्टेड साउंड का फ्रीक्वेंसी n डबल ट्रिपल डैश। समझ में आ गई बात? देखिए देखिए, ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट आएगा तो n डैश होगा, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ तक पहुंचता है तो n डबल डैश होता है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आता है तो वो n ट्रिपल डैश होता है। यू अंडरस्टैंड दैट? तो n डबल डैश इज रिसीव्ड बाय द वॉल, और वॉल जो रिफ्लेक्ट करेगा रिसीव्ड बाय दिस इज n ट्रिपल डैश, तो मुझे n डैश एंड n ट्रिपल डैश का डिफरेंस चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो let us find out the difference in the two. So I'll find out the difference, n dash and n triple dash का difference हम find out करेंगे। That is called as the beat frequency. So I'll call it as beat frequency. Beat frequency is equal to n triple dash minus n dash. n ट्रिपल डैश है v प्लस vb अपॉन v माइनस vb इंटू n, माइनस n डैश क्या है देखिए वहां पे, v प्लस vm अपॉन v प्लस vb। एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया शायद, ये n डबल डैश तो सही है, n ट्रिपल डैश में वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर क्या है? हाँ, ये मोटरिस्ट है ना, दिस इज मोटरिस्ट है ना, ये बाइकर नहीं है, हम इसको वी मोटरिस्ट बोलना चाहिए, बराबर है ना? दिस इज वी मोटरिस्ट, सो vo इज वी मोटरिस्ट, आई शुड कॉल दिस एज मोटरिस्ट, दिस इज वी मोटरिस्ट, ये वी मोटरिस्ट है। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया, दिस इज वी नहीं, वो मोटरिस्ट होना चाहिए, दिस इज वी मोटरिस्ट। once again, this is वी मोटरिस्ट, इज दैट ओके? और यहाँ पर क्या है वो, v प्लस vm अपॉन v प्लस vb इंटू n, v प्लस vm अपॉन v प्लस vb इंटू n। समझे? अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, सिंप्लीफाई दिस, कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई? यहाँ से कुछ कॉमन आएगा क्या? मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है देखिए, इज दिस कॉमन? ले लीजिएगा कॉमन, क्या मिलेगा, v प्लस vm इंटू n, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन v माइनस v
minus 1 upon v plus b. LCM ले लो इसका, क्या बन जाएगा? a plus b a minus b, b square minus b square, और इधर आएगा b plus b माइनस, ये जब साइन चेंज होंगे तो माइनस v प्लस b, बराबर है क्या? एंड दिस गेट्स कैंसिल, सो ये तो एज इट इज रहेगा. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर हियर? द फाइनल आंसर विल बी 2vb, क्या आएगा? 2 टाइम्स vb into v plus vn into n upon v square minus vb square. Please check whether this is the fixed frequency. I think this is option C है क्या, देखिए. Is this option C? Yeah, it is. This is option C. क्या इसको डबल स्टार बोलेंगे या क्या बोलेंगे? Is this clear? That's a very good problem, and that's the end of sound waves from NCERT for 11th standard.